नमस्कार, आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ, क्योंकि यह भारत के समुद्री इतिहास पर अकादमिक फोकस को पुनर्जीवित करने का पहला प्रयास था। सम्मेलन में 11 देशों के वैश्विक विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जिन्होंने दुनिया के समुद्री क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रयास किया। भारत फोकस में रहा। वैश्विक इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों ने सम्मेलन में साझा विकास के लिए देश के 5000 साल से अधिक पुराने इतिहास पर जोर दिया। इस विषय पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का समुद्री उत्थान राष्ट्र की प्रगति और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में पुनरुत्थान का प्रमाण है। उन्नत बंदरगाह संचालन और रसद से लेकर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक भारत वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य 2030 तक एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनना है। IMEC में हम वैश्विक विशेषज्ञों के लिए अपने ज्ञान को एकत्र करने और अंततः हमारे महासागरों के सतत उपयोग के साथ मानवता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए समस्या समाधान के लिए इसे लागू करने के लिए एक शैक्षणिक मंच बना रहे हैं। Duly complimenting the initiatives which Sonowal ji has taken. Sonowal ji unfolded and Shri Bhupendra Patel ji took it forward. Congratulations, Bhupendra ji. Shri Shantanu Thakur, Honorable Minister of State for Ports, Shipping and Waterways. Shri B.U. Ram Wagheli, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Water Resources, Government of Arunachal Pradesh. Shri Alexio Sikuria, Honorable Minister of Ports, Government of Goa. Admiral Devendra Kumar Joshi, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Shri T.K. Ramchandran, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and distinguished audience. It is my distinct privilege to be part of India Maritime Heritage Conclave 2024, where we converge to celebrate our illustrious maritime legacy while charting India's future trajectory in global maritime affairs, and everyone connected with this particular domain, including people from industry. And this gathering therefore is indicating that the initiative, first of its kind, in this domain will go a long way. Distinguished audience, let me share with you. For last decade, we have seen many firsts in this country in varied fields. This one in maritime heritage. Our maritime heritage is inextricably woven into the fabric of India's ancient civilization, encompassing centuries of trade, cultural cross-pollination, and profound mythological significance. Our civilizational ethos and heritage, thousands of years, is well complemented also by maritime heritage. Dholavira established India's early maritime preeminence as evidenced by archaeological discoveries in Bahrain and Oman. Distinguished audience, Chanakya's Arthashastra meticulously outlined the naval administration, while the Mauryan Empire's maritime influence extended deep into Southeast Asia, leaving an indelible cultural legacy epitomized by Cambodia's majestic Angkor Wat complex. I had the occasion to be there at Angkor Wat. One has to see to believe it, and therefore, presence of our foreign friends from Southeast Asia and Europe is very significant, and my heartiest warm welcome to them on this great occasion. These southern dynasties, Chola, Chera and Pandya, revolutionized maritime commerce
followed by remarkable achievements during the Vijayanagar Empire under the Kalikat's visionary Jamorin rulers. That is why we have extended our invitation to the historians from the different nations, so that we could have better input from them also. Because it is a global integration. It's a global integration. Now I have already cited out the name of the nation. 11 nations, delegates, they have already come and they are participating. We have the Philippines, then we have Thailand, we have Vietnam, so Sri Lanka, many more. And the European countries are also there. Cambodia is also there from Southeast Asia. This is not about investment. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।